पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक्सपो के इस 12वें संस्करण में मैं कमांडर अरविंद कुमार अहमदाबाद की इस भाग्यदायिनी पावन भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ पल न केवल आपको रोमांचित कर देंगे, आपकी धड़कनों को स्पंदित कर देंगे, वरन भारतवर्ष की विजय शक्ति की एक झलक भी प्रस्तुत करेंगे। इस बार रक्षा प्रदर्शनी का मूल विषय पाथ टू प्राइड है, जो हमें आजादी के अमृतकाल की प्रेरणा देता है। इस ऑपडेमो में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, भारतीय तटरक्षक एवं डीआरडीओ हिस्सा ले रहे हैं। નમસ્તે અમદાવાદ રક્ષા પ્રદર્શનની 12મી આવૃત્તિમાં હું સંધ્યા ડેવિડ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। જય સોમનાથ, જય દ્વારકેશ, જય બોલો વિશ્વના નાથની, સ્વર્ણ અક્ષરે લખશે કવિઓ યશ ગાથા ગુજરાતની। મિત્રો, ગુજરાત સાથે વધુ એક યશ ગાથા જોડાઈ રહી છે। ગુજરાત રાજ્યનું અમદાવાદ શહેર ઐતિહાસિક, રાજકીય, સાહિત્ય અને કળાની દ્રષ્ટિએ આગવું સ્થાન ધરાવે છે। આજે અમદાવાદ શહેર વધુ એક ઐતિહાસિક કાર્યક્રમનું સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યું છે અને એ છે ડિફેન્સ એક્સપો 2022। ડિફેન્સ એક્સપોનો મુખ્ય હેતુ રક્ષા ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ભારતીય સંરક્ષણ ઉદ્યોગોની સંભવિતતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે। તમે આજે અહીં ભારતીય નૌસેના, ભારતીય વાયુસેના, ભારતીય થલ સેના, ભારતીય તટરક્ષક તેમજ ડીઆરડીઓ દ્વારા કેટલીક રોમાંચક કામગીરીઓ, ભવિષ્યવાદી તકનીકો અને ક્ષમતા પ્રદર્શન જોવા જઈ રહ્યા છો। Military organizations and the nature of military operations relate to group rather than individual activities. Their functioning is dependent on a proper and common understanding of collective activities and adherence to uniform procedures and practices. This interoperability and synergy amongst the armed forces enable a nation to maintain its dominance in its area of operations. सैन्य संरचना एवं सैन्य कार्रवाइयाँ व्यक्तिगत नहीं वरन सदैव सामूहिक होती हैं। इनके कार्य का आधार सामूहिक शक्ति को संजोकर एक निश्चित रणनीति का अनुपालन करना होता है। सेना के अंगों में परस्पर सहयोग एवं समरसता राष्ट्र की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करता है। મિત્રો, સેનાની સંસ્થાઓ અને સેના કામગીરીની પ્રવૃત્તિ વ્યક્તિગત પ્રવૃત્તિના બદલે જૂથ સાથે જોડાયેલી હોય છે। સેનાની કામગીરીઓ સામૂહિક પ્રવૃત્તિઓની યોગ્ય અને સામાન્ય સમજણ અને સામાન્ય પ્રક્રિયાઓ, પ્રથાઓના પાલન પર આધારિત છે। સશસ્ત્ર દળોની વચ્ચેના આ આંતરિક કાર્યક્ષમતા અને તાલમેલ રાષ્ટ્રને તેના કાર્યક્ષેત્રમાં તેનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવા સક્ષમ બનાવે છે। India is a net security provider in the Indian Ocean region. Today's demo will showcase the application of technology across a spectrum of conflicts, including war, less than war situations, and peace. It is aimed at evoking a common understanding amongst all stakeholders in the development and employment of India's military power
so as to unite their actions in support of India's national interests and national security objectives. हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व सर्वविदित है। आज का यह ऑपडेमो उभरती नई तकनीक के साथ युद्ध के कुछ रण कौशल का भी प्रदर्शन करेगा। इसका उद्देश्य न केवल सैन्य विधियों से परिचय कराना होगा, परंतु इसमें सभी को भागीदार बनाते हुए राष्ट्र की शक्ति एवं सुरक्षा के आयामों को सुदृढ़ करना होगा। यह कार्यक्रम 4:55 से प्रारंभ होकर 6:30 पर समाप्त होगा। ऑपडेमो की शुरुआत कॉम्बैट फ्री फॉल से होगी, जिसमें भारतीय नौसेना के कमांडो, भारतीय वायुसेना के गरुड़ और थल सेना के पैरा एसएफ लगभग 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर बिल्कुल सटीक जगह पर अवतरण करेंगे। तत्पश्चात डीआरडीओ की स्वचालित नौकाओं और यंत्रों का प्रदर्शन होगा। उसके बाद सीकिंग चार्ली और एलएच हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग ऑपरेशंस के द्वारा मार्कोस और पैरा एसएफ के कमांडो पूरी कॉम्बैट रिग में मंच के सामने साबरमती नदी में उतरेंगे और हाई स्पीड बोट से शत्रु की चौकी पर हमला करेंगे। तत्पश्चात हैंड ग्लाइडर और सारंग फ्लाइट के हवाई करतब आप सभी को रोमांचित कर देंगे। युद्ध में जान लेना जितना आवश्यक होता है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने सैनिकों की रक्षा करना होता है। इसी कड़ी में सर्च एंड रेस्क्यू प्रक्रिया के कई आयाम आज प्रदर्शित किए जाएंगे। उसके बाद स्टाई यानी स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन का प्रदर्शन होगा और फिर नदी के बीच बनी दुश्मन की ऑयल रिग पर नौसेना के क्लियरेंस डाइवर्स पानी के अंदर से जाकर विस्फोट करेंगे। तत्पश्चात ज्वाइंट बैंड कंटिन्यूटी ड्रिल और टैटू सेरेमनी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। દર્શક મિત્રો, આપણી ત્રણેય સેનાઓ પોતાના આ તાલમેલ દ્વારા યુદ્ધ ભૂમિમાં કેવી રીતે કામ કરતી હોય છે તે આપણે અહીં જોશું। ઘણી વખત સેનાઓ દ્વારા ઓપરેશનો ચલાવવામાં આવતા હોય છે કે પછી કોઈ કુદરતી આફતમાં સેના દ્વારા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવે છે। આપણે આવા સમાચાર સાંભળતા હોય છે, પણ મિત્રો આજે આપણી પાસે આ સ્વર્ણ તક છે કે આપણે આ દરેક ઓપરેશન લાઈવ જોવા જઈ રહ્યા છે। તો ટૂંક સમયમાં જ ડિફેન્સ એક્સપો 2022ના લાઈવ ડેમો શરૂ થશે। Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of our chief guest for the day, Additional Director General Recruiting, Major General Ajay Sethi, Sena Medal, Vishish Seva Medal. देवियों एवं सज्जनों, भारतीय नौसेना का मोटो तैत्रीय उपनिषद की एक प्रार्थना से लिया गया है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुः रुरुक्रमः। इसमें शं नो वरुणः भारतीय नौसेना का मोटो है, जिसका अर्थ है, हे वरुण देव, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। Be auspicious unto us.
To kickstart the op demo for today, we have the Combat Freefall. Combat Freefall is one of the modes of insertion of special forces into the enemy area by air using highly maneuverable parachutes. In this challenging evolution, Special Forces personnel get airdropped from a height of up to 36,000 feet, travel under canopy with combat load, and land with accuracy onto the given target. This method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea where the commandos jump along with airdroppable rigid hull inflatable boats to neutralize marine elements such as pirates and narcotic mafia. कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिसमें हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में एसएफ के जवान 36,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो, जिससे किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। દર્શક મિત્રો, તમારું ધ્યાન હું આકાશ તરફ લઈ જવા માંગીશ કે જ્યાં આપણા કમાન્ડો પેરાશૂટના માધ્યમ દ્વારા નીચે આવી રહ્યા છે। આ પદ્ધતિને કોમ્બેટ ફ્રી ફોલ કહેવામાં આવે છે। કોમ્બેટ ફ્રી ફોલ એ અત્યંત દાવપેચ કરી શકાય તેવા પેરાશૂટનો ઉપયોગ કરીને હવા દ્વારા દુશ્મનના વિસ્તારમાં વિશેષ દળોને દાખલ કરવાની એક પદ્ધતિ છે। સ્પેશિયલ ફોર્સના જવાનોને 36,000 ફૂટની ઊંચાઈથી હવામાં છોડવામાં આવતા હોય છે, જ્યાં તેઓ લડાયક હથિયારના ભાર સાથે કેનોપી હેઠળ મુસાફરી કરતા હોય છે અને આપેલ લક્ષ્ય પર ચોક્કસ જમીન મળે છે જ્યાં તેઓ ઉતરે છે। મિત્રો, ટૂંક સમયમાં જ આ કમાન્ડો આપણા પાછળના મેદાન પર ઉતરશે, જે તમે તમારા સામે લગાવેલી સ્ક્રીન પર જોઈ શકશો। Look about to your left and you can see Marine Commandos of Indian Navy, Garuds of Indian Air Force and Para Special Forces Commandos of Indian Army performing the combat freefall. They have jumped from Indian Air Force helicopter Me-17 from a height of 8,000 feet and will be landing shortly on the ground behind you. Captain of the aircraft is Squadron Leader Nishank Avasthi with co-pilot Flight Lieutenant Rajgopal of Indian Air Force. And the combat freefall team is led by Wing Commander Dora of Indian Air Force and Mahesh Petty Officer of Indian Navy Marcos. दर्शकों, ऊपर की तरफ आकाश में नजरें गड़ा कर रखिए। इस समय भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो, भारतीय वायुसेना के गरुड़ और थल सेना के पैरा एसएफ कमांडो वायुसेना के हेलीकॉप्टर मी-17 से 8,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर हवा में तैर रहे हैं। ये सभी मुख्य मंच के पीछे के मैदान में अवतरण करेंगे। इन पैराट्रूपर्स के नाम हैं महेश कुमार पेडी ऑफिसर, प्रफुल्ल त्रिपाठी पेडी ऑफिसर, रविंद्र मलिक पेडी ऑफिसर, पीयूष भारती पेडी ऑफिसर, एन सिंह वारंट ऑफिसर, एन के नरेश भानु जूनियर वारंट ऑफिसर और भानु प्रताप नायब सूबेदार। મિત્રો, ઘણી વખત શું હોય છે કે દુશ્મનના વિસ્તારમાં જમીનથી દાખલ થવું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે, તો તે સમયમાં આપણે આ પદ્ધતિના દ્વારા દુશ્મનના વિસ્તારમાં દાખલ થઈ શકીએ છીએ। Ladies and gentlemen, our first commando is about to touch down in a few minutes from now. On touchdown, he will be felicitating our chief guest for the day. And that's touchdown.
जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले कमांडो जमीन पर उतर चुके हैं। अब ये आज के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। મિત્રો, આ કમાન્ડોના સાહસને વધારવા માટે એકવાર આપણે જોરદાર તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરીશું। देवियों और सज्जनों, आज के हमारे मुख्य अतिथि अब मंच पर पहुंच रहे हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज विश्व के पटल पर भारतवर्ष रक्षा उपकरणों के विकास एवं उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा है। अगली कड़ी में आप डीआरडीओ के प्रयासों से बने कुछ नए स्वचालित उपकरण देखेंगे। यह प्रयास आधुनिकता और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को पूर्णतः चरितार्थ करता है। With the ongoing trends in defense sector, the world is recognizing India as an emerging defense innovation and manufacturing hub. You will shortly witness astounding capabilities of various unmanned autonomous systems, which shall be an important part of all future operations. The display of these unmanned assets would highlight the aim of modernization through indigenization in the true spirit of Atmanirbhar Bharat.
you will soon witness the fast-moving autonomous weaponized surface vehicle developed by DRDO. This surface vehicle is fitted with a 7.62 mm gun. The boat can be used for coastal surveillance to track and engage the target in an offensive role. Powered by a 75 horsepower outboard motor for propulsion, this boat can be operated from a specially designed ground control station. The live stream for this platform is made available to the controller at a mobile location. With an endurance of 8 hours, this boat can be remotely operated up to a range of 5 kilometers. The system will enhance the coastal defense of the country, providing increased deterrence to coastal threats. Ladies and gentlemen, approaching steadily from your right, the autonomous weaponized surface vehicle developed by Defense Research and Development Organization. હવે તમે જોશો કે આપનું ભારત આત્મનિર્ભર ભારત બનવાની દિશામાં કેવી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. મિત્રો, તમે અહીં DRDO દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી માનવરહિત અને હથિયારબંધ નૌકાઓ જોઈ રહ્યા છો. તમારા સામેથી પસાર થતી બોટમાં આગળની તરફ 7.62 mm ગન લગાડી છે, જે તમે જોઈ શકો છો. આ બોટ સ્વયં સંચાલિત છે અને તેને ગ્રાઉન્ડ લેવલથી કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આપણા વિશાળ દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા અને સર્ચ ઓપરેશનમાં આ બોટ ખૂબ ઉપયોગી છે. Approaching next is the weapon-mounted surface vehicle for inland water application. This second autonomous boat that you see in front of you is based on a composite hull and powered by 40 horsepower outboard motor. Designed for deployment in inland water bodies like lakes and rivers in an offensive role, the boat is fitted with a twin-axis gun mount on the bow with the provision to carry a light machine gun. Ladies and gentlemen, the weapon-mounted surface vehicle for inland water application. दूसरी नौका स्वचालित सशस्त्र नौका है, जिसका विकास अंतर्देशीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है. लाइट मशीन गन से युक्त यह नौका झीलों, नदियों आदि में सुरक्षा की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त है. ये सभी स्वचालित नौकाएं एक पोर्टेबल रिमोट कंट्रोल से संचालित की जा रही हैं. यह कंट्रोल स्टेशन कहीं भी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है. Sailing past right now is a twin-hull catamaran boat. In line with the vision of Atmanirbhar Bharat, it has been fitted with indigenously developed sonar for mine detection and generation of detailed underwater bed profile. It is capable of autonomous operations for a duration of 6 hours. This is the twin-hull catamaran boat. મિત્રો, ત્રીજા નંબરની બોટ એક કેટામરન બોટ છે. આ બોટ આપણને પાણીના અંદરનું તાપમાન બતાવવામાં ઉપયોગી છે. 3 મીટર લાંબી ધાતુની આ બોટ સ્વયં સંચાલિત છે. ગ્રાઉન્ડ લેવલથી આ બોટને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આત્મનિર્ભર ભારત દ્વારા બનાવેલું સોનાર આ બોટ પર લગાડેલ છે, જે પાણીના અંદરની માહિતી આપણને ચિત્ર M1 દ્વારા આપે છે. ચિત્ર M1 ને તમે સામે લગાડેલ સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. What you see on the screen to your right is a display of Chittar M1, the underwater imaging acoustic system. As the boat maneuvers across Sabarmati river, you can see the Chittar M1 sonar scanning the riverbed
and displaying the detected objects on the screen. We would now like to invite your attention to the floating platform near the jetty to your left, which will shortly be displayed on the screen to your right. The portable diver detection sonar is being deployed from this platform into water. The portable diver detection sonar system is capable of detecting potential underwater threats like divers and diver delivery vehicles in shallow waters. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के बाईं तरफ तैर रहे एक पीले रंग के यंत्र की तरफ ले जाना चाहूंगा। यह पोर्टेबल डाइवर डिटेक्शन सोनार है जो हमारे सुरक्षा घेरे में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का पता लगा सकता है। ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर इस यंत्र के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ सोनार पिक्चर उस जगह के मानचित्र के साथ देख सकते हैं। यह यंत्र सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर रहे दुश्मन के डाइवर का पता लगाकर संचालन कर रही टीम को तुरंत सूचित करता है। इसे अपनी जहाज के पास या हार्बर में 24 घंटे निगरानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। Ladies and gentlemen, now prepare yourself for the exciting slithering operations. Look up to the skies. Approaching from your right, the Indian Navy ALH helicopter under the command of Commander Piyush Malik with co-pilot Lieutenant Commander Shubham, and the Indian Navy Sea King Charlie helicopter under the command of Commander Mahesh Singh and with co-pilot Commander Singhal. They make approach to demonstrate special helicopter-borne insertion of fully armed and self-contained commandos of Indian Navy and Indian Army. Slithering is an exercise where troops are dropped from a helicopter in an area of operation using a rope attached to the chopper. Needless to say, this evolution of expeditious insertion involves a great deal of precision and immense courage. You are also observing a third helicopter, also an ALH helicopter of the Indian Navy, towards the eastern bank of Sabarmati River, under the command of Commander Ashwin Simha with co-pilot Lieutenant Commander Gurpreet. Commandos will be seen providing air cover as the other two helicopters disembark the commandos. दर्शकों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सी किंग चार्ली और एएलएच द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित आर्मी और नेवी के कमांडो को स्लिथरिंग करके उतरते देखेंगे। एक रस्सी के माध्यम से कुछ ही पलों में ये हेलीकॉप्टर किसी जहाज या स्थान पर इन मार्कोस को उतार सकते हैं। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। दो छोटी नौकाएं उनके नीचे आ रही हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर 40 से 45 फीट पर आकर कमांडोज को रस्सी से नीचे उतारेंगे। तीसरा हेलीकॉप्टर एएलएच है जो दूसरे दो हेलीकॉप्टर्स को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। મિત્રો, તમારે સામે જે ઓપરેશન થઈ રહ્યું છે તેને સ્લિથરિંગ ઓપરેશન કહેવામાં આવે છે। સ્લિથરિંગ ઓપરેશન કમાન્ડોને દુશ્મનના વિસ્તાર તેમજ દુશ્મનના જહાજો પર ઉતારવા માટે થાય છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બંને હેલિકોપ્ટરમાંથી બે રોપ નીચે આવી છે। ટૂંક સમયમાં જ કમાન્ડો એક પછી એક નીચે આવશે અને તમે જોઈ શકો છો કે કમાન્ડો નીચે આવી રહ્યા છે। જે નીચેની જેમની બોટ એટલે કે રબરની બોટમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરી રહ્યા છે। ત્રીજું હેલિકોપ્ટર આપણા કમાન્ડોને ઉપરથી સુરક્ષા આપી રહ્યું છે। Ladies and gentlemen, you have been witnessing the brave Marine Commandos of Indian Navy slithering from the Sea King Charlie helicopter to your right and the Para Special Forces Commandos of Indian Army slithering down from the ALH helicopter to your left. Our men have now descended onto the rubberized boats that we call Gemini crafts for the next leg of operations.
कमांडोज स्लिवरिंग ऑपरेशन से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने के पश्चात अपना स्थान लेते हुए और उसके पश्चात वे संयुक्त रूप से दुश्मन की तरफ रबड़ की नौका से आक्रमण करने आगे बढ़ेंगे। After having successfully completed the slithering operations, you will now see the commandos engaging in high-speed transit as they prepare to undertake an assault and neutralize the enemy post ashore. A high level of professionalism and coordination is required to combat rough seas, massive waves, and strong winds, which make this a very daring evolution. This operation can also be used to recce an area prior launching full-scale amphibious operations. દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણા કમાન્ડો ઝડપથી કિનારા તરફ આવી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ દુશ્મનની ચોકી પર હુમલો કરશે. समुद्र में ऊंची लहरों, प्रचंड हवा के झोंकों और सागर की उथल-पुथल में इस प्रकार सीना तान कर चल पड़ना इनके अदम्य साहस, परस्पर सहयोग और उच्च कोट के प्रशिक्षण का परिचायक है. Now watch the commandos spring to action as they neutralize the adversary outpost in the lower walk. નીડર અને સાહસથી કેવા આપણા કમાન્ડો દુશ્મનની ચોકી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. Ladies and gentlemen, the enemy has been taken down. કમાન્ડો દ્વારા દુશ્મનની ચોકી પર વિજય મેળવી લેવાય છે. દર્શક મિત્રો, જોરદાર તાળીઓથી આપણે તેમનું સાહસને વધાવીશું. दुश्मन की चौकी पर कब्जा करने के बाद कमांडोज मुख्य अतिथि को रिपोर्ट बनाते हुए 10वीं शताब्दी के प्रतापी राजा भोज ने कहा था, मानधाता च महीपति कृते युगालंकार भूतो गतः न एकेनपि समम गता वस्मति नूनम त्वया यास्यति. यह शाश्वत सत्य है कि हर युग में अनेक प्रतापी लोग हुए, पर यह धरती किसी के साथ नहीं गई. युगों के साथ वीर चले जाते हैं, परंतु वीरता सदैव प्रभुत्व में रहती है और इसीलिए तो कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा. धरती पर आधिपत्य सदैव वीरों का ही रहा है. आज के इस ऑफ डेमो में मां भारती के बेटों की वीरता की कुछ झलकियां प्रदर्शित की जा रही हैं. A huge round of applause for the Marine Commandos and Special Forces Commandos of the Indian Navy and Indian Army as they make their exit from the area of operations. Jai Hind,
Good evening. કેમ છો અમદાવાદ? મજામાં? હું સારંગ ટીમની કમેન્ટેટર ફ્લાઇટ લેફ્ટનન્ટ પલ્લવી છું અને આ મારું સૌભાગ્ય છે કે હું આજના આ પ્રદર્શનની માહિતી આપીશ. Ladies and gentlemen, the team flies Advanced Light Helicopter or Dhruv as it is called, which is the first indigenous helicopter manufactured by the Hindustan Aeronautics Limited. The 12th edition of Defence Expo 2022 is also a dedication towards indigenization with the theme Path to Pride, and the aim is to showcase the might of the domestic defence industry, which is now powering Make in India, Make for the World resolve of the government. मोर को संस्कृत में सारंग कहते हैं, जो कि सुंदरता और रमणीयता का प्रतीक है. जैसे मोर अपने सुंदर नृत्य से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसी प्रकार मोर की भांति विभिन्न रंगों में रंगे सारंग दल के ये हेलीकॉप्टर अपने अद्भुत हवाई नृत्य से सबका मन मोह लेते हैं. इसलिए इस टीम को सारंग का नाम दिया गया है. देवियों एवं सज्जनों, ऐसा सुंदर दृश्य जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है. With this, the Sarang pilots are all set to perform a ballet in the air. उड़ान प्रदर्शन सुंदरता एवं गौरव को प्रतिपादित करता है. भारतीय वायुसेना के वैमानिक अपनी सूझबूझ और कुशलता से इन वायुयानों को उनकी अधिकतम क्षमता तक उड़ाने की हिम्मत रखते हैं. सारंग दल के ये हेलीकॉप्टर मात्र 70 से 130 मीटर की ऊंचाई एवं 3 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र के भीतर आपको हैरत अंगेज कारनामे कर दिखाएंगे. So ladies and gentlemen, the Sarang team is ready to dazzle this arena with overwhelming display of skill, grace and beauty. Get ready, hold tight for some zip, zap, zoom as we present to you the Sarang Helicopter Display Team. The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast to the 12th edition of Defence Expo. Sarang 1 is leading the formation with Sarang 4 flying right behind him. Sarang 2 is formatting to his left and Sarang 3 is to his right. Leading the formation is the team leader, Wing Commander Girish Komar, Vayu Sena Medal, a qualified flying instructor and an instrument rating instructor and examiner. He has been one of the pioneers seeing through the fledgling Sarang team to today's one of its kind in the world. The co-pilot of Sarang 1 is Squadron Leader Akshay. स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण, स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफॉर्मों के संचालन और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने की हमारी खोज का परिणाम है. भारतीय वायुसेना ने हमेशा स्वदेशी रक्षा उत्पादन शक्ति के विकास और क्षमताओं को प्रोत्साहित किया है. And the next formation is a dedication to indigenization and of course to our motherland, making the English letter I in the sky. Coming in from your right, Sarangs in India formation. Captain of Sarang 2 is the Mr. Cool Wing Commander Sridhar. We fondly call him Shri. The co-pilot of Sarang 2 is a Squadron Leader Avinash. The pilot in command of Sarang 3 is Mr. Perfectionist Wing Commander Patnaik. His co-pilot today is Wing Commander Thakur Vikas Raj Singh. Famous for his witty one-liners and savior solutions, Wing Commander Niket Tiwari or Nike is in command of Sarang 4. His co-pilot today is Wing Commander Krishnan.
Keep looking at the aircraft approaching from your left now. On the leader's command, the formation will change to diamond. An aerial diamond for all the beautiful ladies present here this evening. This time, from your left, ladies and gentlemen. Do not shift your gaze, ladies and gentlemen. You are in for a breathtaking surprise. And there goes number 4 pulling up for a stall turn. The aircraft will join us soon after a short break. Now, as we look slightly to the right, Sarang 1, 2 and 3 are positioning for the team's signature maneuver, the Dolphins Leap. This maneuver requires a very high degree of skill achieved by strict mind and body coordination. All 3 helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized stall turn to the left. So hold your breath and look straight ahead as Sarang 1, 2 and 3 run in for the Dolphins Leap. And there they go, like a dolphin in the ocean, Sarang's in Dolphins Leap. And there goes Sarang 4 accelerating to join up with the formation. On this occasion, let me take you back into history and tell you something about the origin of our team. On 31st January 2003, for the first time, 2 ALH aircraft under evaluation trials took off and performed in unison. It was on this historical day that Sarang team was conceptualized. Later, ALH evaluation flight was renamed as 151 Helicopter Unit in December 2003. We, Sarang, take immense pride in stating here that our team is presently the only 4-aircraft military helicopter display team in the world. The flexibility of this aircraft has been time-tested from varied operations to SWAG displays. On this note, set your gaze straight ahead as the team is rolling in for the crossover break. We shall listen out for the leader's call. As the team prepares for the next maneuver, a word about the maintenance team, who ensures that these 4 birds take to the skies and return safe. The untiring and dedicated team of the technicians is being ably led by Wing Commander Narendra Singh. Along with him, sharing this onerous responsibility are Wing Commander Satish, Squadron Leader Selvin, Squadron Leader Shravan and Squadron Leader Anmol. Ladies and gentlemen, time now to see these teammates in lower and closer action. As they turn inbound towards each other for the vertical synchro maneuver, we call it the double aerocross. To your right is Gomer with Sangha, Pattu with TVR, and to your left is Shri with Avi and Nike with Krish. To your right and left, ladies and gentlemen.
of the team safety officer. Today's safety officer is squadron leader Gokul, assisted by the videographers. These highly skilled pilots leave no opportunity to show off the capabilities of the helicopter they fly. Indeed, a fine product of Indian aviation industry and a symbol of Make in India. The other pilots of the team are Wing Commander Gopi Krishna, Wing Commander Veer, Squadron Leader Karan Prabhakar, Squadron Leader Dumbre, Squadron Leader Sachin Govind, Squadron Leader Sangha, Squadron Leader Dhanveer Singh and Squadron Leader Akash. The degree of difficulty has now gone up, ladies and gentlemen, as the team prepares for the level mesh. Coming in from opposite directions, each helicopter will cross the other within a gap of less than 1 second, and that too in the same plane. Look straight ahead for level mesh. Get ready to feel the heat go up as the two pairs are positioning for the level cross. The helicopters are flying at just 50 meters above us, with Sarang 1 and Sarang 3 to your right and Sarang 2 and Sarang 4 on your left. Keep looking to your right and left as the helicopters turn in towards each other. It will be a matter of astonishment to you all that while doing these daredevil maneuvers, the aircraft maintains the distance of only 1 rotor diameter. And such precision is the result of immense practice, training and split-second reactions that the team undergoes each and every time. One such example of precision is ready to be presented. Coming in from opposite directions, 2 helicopters will cross the other in high speed and perform yet another stall turn. Look straight ahead for Sarang 3 and Sarang 4 in high-speed cross. Integrity in diversity is India's distinction. That trickles down to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim of winning hearts and saving lives. Ladies and gentlemen, right in front of you, with love, Sarang Hart. जोश के साथ होश का होना भी अति आवश्यक है। उड़ान प्रदर्शन का यही आधार है। हेलीकॉप्टर को उसकी पूर्ण क्षमता से जोश और होश से उड़ाना तब तक संभव नहीं जब तक हमारे तकनीशियन इस चुनौतीपूर्ण कार्य में इंजीनियरिंग अफसरों के साथ मिलकर इसको अंजाम न दें।
Our team boasts of the finest air warriors of the Indian Air Force, an embodiment of the professionalism and ethos of the IAF. The Sarang team has time and again been called to the fore in humanitarian assistance and disaster relief missions. Since the team's formation, it has mesmerized the audience in Singapore, Chile, UAE, Germany, United Kingdom, Bahrain, Mauritius, Sri Lanka, and last year the Sarang team became the first to participate and represent our country in March 21 International Air Show held in Moscow. Ladies and gentlemen, look straight ahead as the team is rolling in for the grand finale of today's display. The Sarang split on the soul-lifting tune of Vande Mataram. As the formation splits, the leader will pull up to present a salute to the nation. Let's listen out for the leader's call. દર્શક મિત્રો, હું આશા રાખું છું કે સારંગ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલું ડિસ્પ્લે તમે ખૂબ જ રોમાંચક રીતે એન્જોય કર્યું હશે. Ladies and gentlemen, Sarang is also available on social media platforms. You can follow us on Instagram and Twitter handles as Sarang_IAF. So till we meet again, on behalf of the Sarang team leader, this is Sarang commentator, Flight Lieutenant Pallavi Sangwan signing off. Jai Hind. माता न जन्मेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा. तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा. मिलती न जवानी भिक्षा में, तलवार मिली कब मांगे से. प्राणों को त्रास मिले न कभी, यूपी दिखाकर आगे से. बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती. मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मरती. दर्शकों, अब आपके समक्ष भारतीय वायुसेना के उद्देश्य वाक्य नभास प्रशम दीप्तम को चरित्रार्थ करते हुए पावर्ड हैंड ग्लाइडर के साथ आपके ठीक सामने से आ रहे हैं ग्रुप कैप्टन बलजिंदर सिंह बाजवा और सार्जेंट विशाल कुमार. For once you taste the flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards. For there you have been, and there you will long to return. Ladies and gentlemen, flying right in front of you with the red smoke up in the air is a powered hand glider. Flying today, this glider is Group Captain B.S. Bajwa and Sergeant Vishal. और हवा में गोता लगाकर नमस्कार की मुद्रा में आप सभी दर्शकों का अभिवादन किया ग्रुप कैप्टन बलजिंदर सिंह बाजवा एवं सार्जेंट विशाल कुमार ने. हम आपको बता दें कि आज हमारे दोनों विमान चालक हवा में गणित के अंक 8 की आकृति बनाकर आप सभी को आश्चर्यचकित कर देंगे. While the powered hand glider gets ready to enthrall you with their maneuvers, let me get you acquainted with the pilots and this machine. Powered hand glider is a unique flying machine which is basically a hand glider with 4-stroke Rotex engine of 55 horsepower and propeller in pusher configuration. This machine has non-conventional controls, that is opposite controls as compared to other conventional aircraft. In this, the pilot and co-pilot sit in tandem configuration. भारतीय वायुसेना का उद्देश्य वाक्य श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है, जिसका स्रोत है नभस्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वां प्रविधिनांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विश्व. हे विश्व, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूं.
there flying up in the air and diving down. The powered hang glider is a part of aerosports and has been participating in various demonstrations at civil and military locations. Recently, they participated at Air Show during the 90th Air Force Day celebrations at Chandigarh. दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में ये पावर्ड हैंग ग्लाइडर इस साबरमती रिवर से 150 फीट की ऊंचाई पर ही है और अभी हमें आरटी कॉल भी मिली है सार्जेंट विशाल कुमार के बेटे से, जो कि आप सभी के बीच उपस्थित है, कि तालियां गुजरात क्यों नहीं बजा रहा है। Our hang glider has won many laurels to its credit. As a part of Indian Air Force Platinum Jubilee celebrations, a record-breaking of 3,000 kilometers was performed by the Director of Adventure. And in 2006, Air Force team set a national record by traveling 3,700 kilometers in powered hang glider in a 24-day expedition. So ladies and gentlemen, please give a big round of applause as you will soon see the powered hang glider flying right in front of you. और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सार्जेंट विशाल कुमार का और उत्साह बढ़ाइए उनके बेटे हरि कुमार का। Flying in front of you with the tricolor, please wave to the pilots as they wave back at you. And I hope you enjoyed this demonstration as much as we enjoyed presenting it to you. Lined up next is a demonstration of the indigenously designed autonomous lifebuoy, also called battery-powered self-propelled lifebuoy. You will see a demonstration of its deployment, wherein a distressed survivor will be positioned in the river and the lifebuoy will be seen proceeding towards him for his rescue. The lifebuoy can be deployed by both day and night and has self-righting capabilities. These lifebuoys have been indigenously manufactured by Messrs. Self Automations, Kolkata, under the EXPO program of the Government of India. देवी और सज्जनों, अगले क्रम में अब आप स्वचालित लाइफबॉय देखेंगे। नारंगी रंग के स्वचालित लाइफबॉय पानी में डूब रहे किसी भी मनुष्य के लिए जीवनदायी हो सकते हैं। इस समय पूर्णतः पारंगत दो गोताखोर प्रधान नाविक मेघनाथ और उत्तम नाविक तोमर डूबते हुए व्यक्तियों की भूमिका में हैं। नारंगी रंग के लाइफबॉय दूर से रिमोट कंट्रोल से चलाकर उनके पास लाए जा रहे हैं कि जब तक कोई हेलीकॉप्टर या नौका उनकी मदद को न पहुंचे तब तक वे सुरक्षित रहें। દર્શક મિત્રો, મેં તમને આગળ પણ જણાવ્યું તે પ્રમાણે સેના ઘણી વખત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરતી હોય છે। અત્યારે તમે સાબરમતી નદીમાં બે ડૂબતા વ્યક્તિને જોઈ શકો છો અને સ્વયં સંચાલિત લાઈફ બોય તેમના સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે। લાઈફ બોય ડૂબતા વ્યક્તિની પોઝિશન બતાવે છે। Eyes to the sky. Once again, ladies and gentlemen, welcome the Indian Coast Guard ALH helicopters, who will soon commence the operational search and rescue demonstration. The ALH helicopters are renowned for the innumerable lives they have saved in search and rescue missions. The two ALH helicopters commanded by Commandant Saurabh and Commandant Sabarmati will now showcase two different ways of recovering survivors at sea. You will see one helicopter operating its rescue basket provided specially to the aircraft for injured or unconscious survivors, whilst the other helicopter will be seen lowering the rescue strap to pick up the survivor. दर्शकों, अब आप सर्च एंड रेस्क्यू के तटरक्षक के हेलीकॉप्टर एएलएच को सामने देख सकते हैं। एएलएच हेलीकॉप्टर इस प्रकार की रक्षा प्रक्रिया में माहिर माने जाते हैं।
अब ये रेस्क्यू बास्केट यानी रक्षा टोकरी तथा रेस्क्यू स्ट्रैप यानी रक्षा पट्टी दोनों तरीकों का प्रदर्शन करेंगे। रक्षा टोकरी का प्रयोग छोटे व्यक्तियों की रक्षा के लिए किया जाता है। अपनी जान को खतरे में डालकर किसी और की जान बचाना निश्चय ही इनके साहस और शौर्य का परिचायक है। તમે જોઈ શકો છો કે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના બંને હેલિકોપ્ટર આપણા બંને વ્યક્તિને બચાવવા માટે આવી ચૂક્યા છે। ટૂંક સમયમાં જ આ બંને હેલિકોપ્ટરમાંથી તમે જોશો એકમાંથી રક્ષા બાસ્કેટ નીચે જતા તો બીજામાંથી રક્ષા પટ્ટી નીચે જતા તમે જોશો। The ALH helicopter to your left can now be seen lowering the rescue basket, whereas the ALH helicopter to the right can be seen lowering the rescue strap. Both the survivors are now being reeled back steadily into the aircraft. Can we have a huge round of applause for the brave men for such an immaculate display of dexterity in saving lives in peril at sea? દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બંને વ્યક્તિને પાણીમાંથી બચાવી લેવાયા છે અને ટૂંક સમયમાં જ તેઓને સુરક્ષિત સ્થાને લઈ જવાશે। What we have seen now is a true depiction indeed of the motto of the Indian Coast Guard, Vayam Rakshama, we protect, in synergy with the Indian Navy. As the ALH helicopters of Indian Coast Guard depart in style after having completed the search and rescue mission, they make their way for yet another Seeking Charlie helicopter of the Indian Navy. Ladies and gentlemen, to your right in the sky once again, the Seeking Charlie helicopter of the Indian Navy making approach. Their mission? Speedy extraction of Marine commandos from the area of operations. Captain of the aircraft is Commander Shailendra Singh, Nausena Medal, with co-pilot Lieutenant Commander Gyanendu. Flight divers forming part of the team are Anil, Mast Chief Flight Diver, and Mahesh, Petty Officer Flight Diver. The operation you are about to witness is termed
as STI, which stands for Small Team Insertion and Extraction. This method is used for speedy insertion and extraction of small teams of Marine commandos in an enemy-controlled area which is not suitable for helicopter landing and has risk of lethal incoming fire. મિત્રો, તમે જે ઓપરેશન હવે જોવા જઈ રહ્યા છો તેને સ્ટાઈ ઓપરેશન કહેવામાં આવે છે. સ્ટાઈ એટલે કમાન્ડોની એક નાની ટીમ કે જે ઝડપથી દુશ્મનના એરિયા શિપમાં દાખલ થઈ સોંપાયેલું મિશન પૂરું કરી ઝડપથી બહાર નીકળે છે. ઘણી વખત હેલિકોપ્ટરને લેન્ડ કરવાનું મુશ્કેલ હોય છે, તો તે સમયમાં આપણા કમાન્ડોને આ પદ્ધતિ દ્વારા બહાર નીકાળી લઈ જવાય છે. दर्शकों, अब आप स्टाई यानी स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया देख रहे हैं. कुछ देर पहले जिन कमांडो ने दुश्मन की चौकियां नष्ट की थी, अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से निकाल ले जाएगा. हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं और जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है. तत्पश्चात सभी जवान पेयर से जोड़ी में उड़ चलते हैं. इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए ये जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं. इस प्रदर्शन में भाग ले रहे 6 गर्वीले कमांडो हैं. के गादारी POCD, SS चौधरी लीडिंग लॉग, MS बजेटा लीडिंग सीमैन, गौरव नेगी लीडिंग सीमैन, MK ढाका C1, NS वेस्ट C1. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે હેલિકોપ્ટરમાંથી એક રોપ નીચે આવી ચૂકી છે. હવે આપણા કમાન્ડો આ રોપ સાથે બેની જોડીમાં પોતાને સુરક્ષિત રીતે બાંધશે. इस समय कमांडोस रस्सी में अपने आप को सुरक्षित करते हुए एक बार सभी 6 कमांडोस अपने आप को स्ट्रैप में सुरक्षित रूप से फंसा लें. उसके पश्चात पायलट को संकेत कर दिया जाता है और फिर सभी एक साथ हवा में उड़ चलते हैं. Ladies and gentlemen, let's hear it for the Marine Commandos of Indian Navy. Now, lo and behold, you're about to witness a daring demonstration by the naval clearance divers. Underwater clandestine operations by clearance divers is a service most silent in its literal sense. The clearance divers of Indian Navy, in their combat role, carry out underwater clandestine attacks on enemy ships in their harbors and vital offshore installations that include oil rig platforms and their subsea pipelines. दर्शकों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे. नदी के बीच में एक पॉन्टून लगा हुआ है जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है. नौकाओं से इन साहसी बाधा निकाशी गोताखोरों को
यथासंभव टारगेट के नज़दीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर ऑयल रिग तक पहुंच जाते हैं। यह ऑरेंज या लाइट हमको सिर्फ इंकित करने के लिए किया जाता है कि डाइवर इस समय वहां पानी की सतह के नीचे हैं। દર્શક મિત્રો, હવે તમે જે જોવા જઈ રહ્યા છો, હું ખાતરીની સાથે કહું છું કે આ લાઈવ ડેમો તમે વર્ષો વર્ષ ભૂલવાના નથી. નેવીના ક્લિયરન્સ ડાઇવર્સ દ્વારા અદ્રશ્ય અને શાંતિ રીતે પાણીની અંદર જઈ દુશ્મનની તેલ ઉત્પાદક પ્લેટફોર્મમાં વિસ્ફોટક લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. ઘણી વખત દુશ્મનની યુદ્ધ લડવાની ક્ષમતાઓને અવરોધવા માટે આ રીતના ઓપરેશન હાથ ધરાતા હોય છે. દુશ્મનના જહાજો, બંદરગાહો તેમજ તેલ ઉત્પાદક પ્લેટફોર્મને વિસ્ફોટક દ્વારા ઉડાવી મૂકવામાં આવતા હોય છે, જેનો લાઈવ ડેમો આજે તમે જોવા જઈ રહ્યા છો. इस प्रदर्शन का संचालन कर रहे हैं कमांडर दिनेश सिंह राणा और फायरिंग ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर तेजजीत सिंह गिल. As the boats approached the oil rig, divers were launched using special diver propulsion vehicles. And now focus your attention as the divers covertly plant explosives on the oil rig and make a quick exit. दाहिनी तरफ से पानी के अंदर से जाकर ऑयल रिग पर पहुंच रहे हैं चमन सिंह C1 CD और योगेश कुमार लीडिंग सीमैन CD. बाईं तरफ से आने वाले क्लियरेंस डाइवर्स हैं सुमित C1 और अंशुल सारस्वत C1. इस प्रदर्शन में अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं यूके सिंह MCPO-1 CD, वी पाल MCPO-2 CD और KN कुमार POME. તો મિત્રો, તૈયાર થઈ જાઓ અને પોતાની જગ્યાને મજબૂત રીતે પકડી લો. તમે સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છો ડિફેન્સ એક્સપો 2022ના સૌથી મોટા લાઈવ ડેમોના. The demolition of enemies' critical oil production facilities, as will be demonstrated in front of you, disrupts war-waging capabilities of the enemy that will eventually prove decisive in warfare. The clearance divers truly come unseen underwater. दर्शकों, लगभग अदृश्य रूप से ऑयल रिग पर पहुंचकर क्लियरेंस डाइवर्स ने एक्सप्लोसिव्स लगा दिए हैं. अब वो फिर लगभग उसी प्रकार पानी की सतह के नीचे रहते हुए बाहर की तरफ सुरक्षित दूरी तक चले जाएंगे. उसके बाद अपनी रबर की नौकाएं जेमिनी उन्हें वहां से और सुरक्षित जगह पर ले जाएंगी. तत्पश्चात एक रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग ध्वस्त कर दी जाएगी. The scope of activity for a clearance diver varies depending on the specific task that they are assigned. But historically, the most defining competence is their skill in underwater demolition using explosives. Clearance divers are full-time specialist divers who undertake diving, demolitions, explosive ordnance disposal, and improvised explosive device disposal. The primary focus of clearance divers is to perform explosive ordnance disposal. दोनों रबर की नौकाएं जेमिनी अब क्लियरेंस डाइवर्स को ऊपर जेमिनी पर लेते हुए, जिससे कि उन्हें
सुरक्षित दूरी पर ले जाया जा सके। उनके सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के पश्चात रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग ध्वस्त की जाएगी। તો તમે જોશો કે ગણતરીના સમયમાં જ પાણીમાં બનાવેલા પ્લેટફોર્મને કેવી રીતે ઉડાવી મૂકવામાં આવવાનું છે। Ladies and gentlemen, tighten your seat belts and hold your breath and watch on. And that's how it's done, ladies and gentlemen, the Naval Clearance Divers. દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બહાદુર ડાઈવર્સ દ્વારા તેલ ઉત્પાદક પ્લેટફોર્મને ઉડાવી મુકાયું છે। શું વાત છે, તમે તો તોડી નાખ્યું, ભાંગી નાખ્યું, ભૂક્કો કરી નાખ્યું। देवी और सज्जनों, हम शांति के पुजारी भी हैं, युद्ध के विजेता भी। हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। आवश्यकता होने पर निश्चय पूर्वक युद्ध करने की सीख हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में दी है। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर रहना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। Up next, we have a special musical treat by the joint marching bands of the Indian Navy, Indian Army, and Indian Air Force, led by Drum Major M. Anthony Raj, Master Chief Petty Officer Musician, 2nd Class. The band will be performing signature marching tunes of the three forces, comprising quick marches, Indian Fleet, Kadam Kadam Badhaye Ja, and Vayu Shakti. And eventually, India's evergreen patriotic melody, Sare Jahan Se Acha, Hindustan Hamara. આપણે સ્વાગત કરશું ત્રણેય સેનાના સંયુક્ત બેન્ડનું કે તેઓ વૈષ્ણવ ભજન તો તેને કહીએ કે જે પીર પરાઈ જાણે રે લોકપ્રિય ગીતના મધુર સંગીત દ્વારા આપણા સૌને મંત્રમુગ્ધ કરશે।
और दोनों हाथ उठाकर उत्साह बढ़ाइए इस सामूहिक प्रस्तुति का। नमस्कार देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने आ रही है भारतीय वायुसेना की वायु योद्धा ड्रिल टीम, जो आपके समक्ष आज एक अद्भुत प्रस्तुति का प्रदर्शन करेगी। मैं स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित इस प्रदर्शन में आप सभी का मार्गदर्शन करूंगा। वायु योद्धा ड्रिल टीम भारत में अपने प्रकार की पहली एवं अद्वितीय टीम है, जिसमें वायुसेना के 28 वायु योद्धा शामिल है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सैनिक का धर्म बताते हुए कहा, स्वधर्मपि चावेक्ष नाविकंपतु महर्षि धम्यार्थ युद्ध क्षेत्रो अन्यत्र क्षत्रिय न विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। सैनिक के इसी धर्म को बताते हुए आज यह टीम आपके सामने कर्तव्यों को 7 विभिन्न तरीकों में दिखाएगी। टीम का आदर्श वाक्य है ड्रिल टू थ्रिल। अब टीम लीडर हमारे मुख्य अतिथि से ड्रिल शुरू करने की आज्ञा लेने जा रहे हैं। शुरू करने की आज्ञा दें। इस टीम की पहली फॉर्मेशन है एरो हेड फॉर्मेशन। हमें यहाँ इन वायु योद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलो है, वह इनके हाथ में खिलौनों के जैसी प्रतीत हो रही है। अब वायु योद्धा दूसरी फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अल्टरनेट लाइन फॉर्मेशन। इस बीच एलएसी प्रियांशु दीक्षित हमारे समक्ष अकेले ही अग्रिम श्रेणी की राइफल टीम का प्रदर्शन करेंगे, जो इनकी एकाग्रता व शारीरिक क्षमता का प्रतीक है। अब टीम क्रॉस फॉर्मेशन बनाएगी और वायु योद्धा अपनी और अपने साथियों की ड्रिल पर अटूट विश्वास का प्रदर्शन करेंगे। और अब देखिए अब तक की एक कठिन प्रक्रिया, जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने पीछे चल रहे साथी की ओर फेंक रहे हैं। अगली फॉर्मेशन है इंक्लाइन लाइन फॉर्मेशन। इसमें वायु योद्धा एक ही कतार में चलते हुए अद्भुत ड्रिल का प्रदर्शन करेंगे। ड्रिल अनुशासन और प्रशिक्षण की तीव्रता का प्रतीक है। यह वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्रिल और अनुशासन भारतीय वायुसेना की जीवन शैली है।
देवियों और सज्जनों, अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से न हटाएं। अब आप देखेंगे कितने अनोखी जादुई अंदाज से ये एक दूसरे को राइफल पास करेंगे। और यह कारनामा एक बार फिर से जो ये अनोखा अंदाज पिछली बार नहीं देख पाए थे। टीम अब स्क्वायर फॉर्मेशन बनाएगी और एक बार फिर से हमारे बीच आ गए हैं एलएसी प्रियांशु दीक्षित अपने बेहतरीन राइफल करतबों के साथ। टीम अब आपके सामने 2 कतारों में प्रदर्शन करेगी ताकि आप उसे ठीक से देख सकें। देवियों और सज्जनों, जब तक आप ड्रिल को देख रहे हैं, मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराता हूँ। इस टीम को प्रशिक्षण एवं कौशल से तैयार करने में योगदान दिया है विंग कमांडर कुणाल खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर आकाश, जूनियर वारंट ऑफिसर ए.के. भगत, सार्जेंट एम.डी.बी. रहमान और कॉपल राकेश कुमार। ड्रिल के संगीत को संयोजित किया है विंग कमांडर जयचंद्रन, विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड ने। आज के टीम लीडर हैं एलएसी आकाश सिंह। पहली पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी अभिषेक, विजय, आलम, पंकज, शुभम, सूरज, रघुपति और एलएसी साहिल। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी विपिन, सुबात्रा, भूपेंद्र, जीएस कति, राजगुप्ता, अंकित, सत्यम और एलएसी अनीश। टीम अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन फॉर्मेशन बनाने जा रही है, जो कि है टनल फॉर्मेशन। देवियों और सज्जनों, अब टीम लीडर अपने साथियों की ड्रिल क्षमता और योग्यता की परीक्षा लेंगे, जो कि आज का सबसे रोमांचक कर्तव्य है। ये खतरनाक कर्तव्य बेहतरीन मानसिक और शारीरिक तालमेल और अपनी एवं अपने साथियों की योग्यता पर विश्वास का प्रतीक है। को ले जाने की आग कदम तुरंत। देवियों सज्जनों, मैं पूरे गुजरात से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से इन बेटों का उत्साह बढ़ाएं, जिनके माता पिता भी आज हमारे दर्शकों के बीच में बैठे हैं। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the Air Warrior Drill Team marching past smartly, making way for the Indian Navy Band for the tattoo ceremony. A military tattoo is a performance of music or display of the armed forces in general. Traditionally, the term tattoo was an indication for men to return to their barracks. Put your hands together for the Indian Navy Band along with the young drummers, or the dynamites as they call themselves. Sit back and watch as they dazzle us with their drums, drill
and dexterity.
today's op demo as part of Defence Expo 2022. और इस अंतिम कड़ी के समापन के साथ आज का ऑफ डेमो पूर्णता को प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि प्रमुख अतिथियों के प्रस्थान करने तक अपने स्थान पर विराजमान रहें। दर्शकों, तीनों सेनाओं में विशेष रूप से नौसेना आम जनमानस की नज़र से दूर ही रहती है। उसका कारण यह है कि हमारी कर्मभूमि अथाह सागर है, परंतु सही मायनों में हम नौसैनिक गर्व से कहते हैं कि समंदर की हसीन लहरों के कामिल हुक्मरां हैं हम। नजर है जिनकी बामे अर्श पर, ऐसे पासवां हैं हम। गर रहें ओझिल फलक से तो क्या गम है दोस्तों, वतन के जर्रे जर्रे पे करते जा फिदा हैं हम। जय हिंद। ડિફેન્સ એક્સપો 2022 ના લાઈવ ડેમો અહીં પૂર્ણ થાય છે. જય હિન્દ.